अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना व हबीबना व हबीब कुलूबिना कुर्रतना व कुर्रत उयूनिना मतलूबना मसहूबना मौजूदना व मकसूदना व आलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल किराम अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। औ कमा क़ाल अलैहि तहिय्यतु वस्सना। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान रसूलिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इश्क मोहब्बत से जरा मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबीयीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी।
name of Allah, the most gracious, most merciful. All praise and glory belongs to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, our creator, our Lord, cherisher and sustainer. Every single thing in the universe belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. We are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and pay our gratitude to Him that He has granted us life and created us as a Muslim ummah and made us the ummah of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the biggest and greatest ni'mat, the greatest blessings and bounty from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to us Muslims. So we are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, and we cannot give enough thanks and pay our gratitude, even though if we throughout our life carry on putting our head in the sujood, prostration, praising to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, still we are not able enough to pay our thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for this ni'mat, to making us to be in the ummah of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My respected elders and honorable brothers and our young fellows, to all of you, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. We are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that in these blessed moments of Jumatul Mubarak, we are in Allah's house to perform our Salatul Jummah. May Allah shower His choicest blessings, salawat and salam upon His beloved Habib Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and upon His holy companions Sahaba Kiram Ridwanullah alayhim ajma'in, and upon His Ahl Bayt Atahar, the holy family of Prophet sallallahu alayhi wasallam, that through their guidance, alhamdulillah, we have achieved the guidance and we are on the right path of Allah subhanahu wa ta'ala, which is known as a Sirat-e-Mustaqim. We make dua, may Allah subhanahu wa ta'ala keep all of you and me on the righteous path of His Sirat-e-Mustaqim, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the safety of Iman. That's the Iman, our true faith in Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam, and on the day of judgment, and having the blessed holy book of Quran as a great guidance book of Almighty Allah, which is the last revelation of Almighty Allah. We are very fortunate. We are very fortunate. May Allah keep us attached with Himself and with His beloved Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So my respected elders and honorable brothers in Islam, my name is Qari Sher Muhammad. I've been invited through the management committee via our respected and honorable Hazrat Qibla Maulana Mufti Umar Khattab Sahib Damat Barakatuhul Aliyah. May Allah bless him. Alhamdulillah, he has guided me to be here with you, inshallah. This is my first visit to the town of Southampton, and this is the first chance to have your ziyarat, to see you, alhamdulillah. So I have read to you one ayah karima from the Holy Quran and one of the hadith of Rasul sallallahu alaihi wasallam, to just highlight a bit of this beautiful guideline of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala in the light of Quran and hadith of Rasul sallallahu alaihi wasallam, that we shall try our best to alhamdulillah get the guidance from the holy book of Allah subhanahu wa ta'ala. But one of the great teaching of our Rasul sallallahu alaihi wasallam, whenever we enter in the masjid, by putting our right foot inside first and then making this dua after sending salawat upon Nabi sallallahu alaihi wasallam, what is the beautiful dua? Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Oh Allah, open for me the doors of your mercy. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे. तो हम अल्लाह कितने अल्लाह के एहसानमंद हैं कि उस रब्बे करीम ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, इस्लाम की दौलत अता फरमाई, मुसलमान फैमिली में पैदा किया. उन लोगों से पूछिए जो कितनी रिसर्च और तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद, ठोकरें खाने के बाद, जब उन्हें हदायत नसीब होती है और फिर कहीं जाकर उन्हें ईमान की दौलत नसीब होती है. लेकिन हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह करीम ने हमें अपने आखिरी रसूल करीम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ अता फरमाया। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इतनी अजीम नेमत है। हम सारी जिंदगी अपना सर सजदे में डालकर उस रब की हम्दो सना करते रहें, हम इस नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। तो वैसे तो बड़ी नेमतें उस मालिक ने दी हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें इस अजीम नेमत को समझकर और अल्लाह का शुक्र बजा लाने की और इस नेमत उज़्मा को हर वक्त अपने सामने रखकर अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब हम अल्लाह के घर में दाखिल होते हैं, we enter with our right foot in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, making this dua, Allahumma aftah li abwaab rahmatik, ऐ अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। सुभान अल्लाह। तो मस्जिद ये अल्लाह का घर है, रहमत वाली जगह है, बरकत वाली जगह है, इबादत की जगह है, अल्लाह की याद और फिक्र वाली जगह है। तो जब हम इसमें दाखिल होते हैं, so we enter with a very pure intention, making this dua, and then after entering there, one of the beautiful another teaching of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, make the first niyat nawaitu sunnat al-i'tikaf, कि अल्लाह के घर में दाखिल होने के साथ ही नफल एतकाफ की नियत कर लें। जितनी देर, जितने मिनट, सेकंड, घंटे आप अल्लाह के घर में रहेंगे, आपको नफली एतकाफ का सवाब मिलता रहेगा। तो यू से, तो क्या कहते हैं, मोहब्बत से जरा मेरे साथ मिलके कह दीजिए, नवाइतो सुन्नत अल-इतिकाफ। तो अल्लाह के घर में नफली एतकाफ की नियत करके हम दाखिल हो गए। अब उसकी रहमत की बरकतें समेटने के लिए फिर अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर to send your salawat upon beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, this is one of the great virtue. If you will do this for the sake of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, then you will be able to understand the great merit and status of your beloved Habib sallallahu alaihi wasallam. When you read this beautiful ayah in the Holy Quran, that and the translation that Allah and His angels are all the time sending salawat upon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Very famous ayah karima from the Holy Quran. The meaning, indeed Allah and His angels, malaika, all the time are sending salawat on beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. Then further Almighty Allah subhanahu wa ta'ala commanded us, Ya ayyuhallazina amanu, ओ खुश नसीब लोगों जिनको ईमान की दौलत मिली है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ईमान वालों को कितनी मोहब्बत से इस तरह पुकारता है। दूसरों कौमों को अल्लाह ने बुलाया तो कभी या कौम मूसा कहा, कभी या कौम ईसा कहा, और कभी उन्हें या कौम लूत कहा। सुभान अल्लाह। या कौम इब्राहिम कहा। लेकिन अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बारी आई तो उनको इस प्यारे खिताब से नवाजा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान की दौलत पाने वाले खुश नसीबो, ओ मोमिन लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ पीपल ऑफ ईमान, सल्लु अलैहि, you also send salawat upon beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, not only salawat darood but also send salam, a worthy salam, very respectful salam in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. So we are very fortunate, and how great is the reward and benefit of sending salawat upon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, when He Himself and His malaika angels are sending salawat upon Nabi sallallahu alaihi wasallam, from here we can understand how great is our Rasul sallallahu alaihi wasallam and how great is his status. And then Allah gave us this opportunity as well, that we also send salawat and salam upon beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. So further, my beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam gave us this beautiful guideline by telling us the great benefit of sending salawat upon him, upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. What my and your beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam say, man salla alayya marratan, मेरे जिस भी उम्मती ने एक मर्तबा भी मेरे ऊपर दरूद भेजा, तो सल्ला अलैहि अशरा मर्रात, अल्लाह उसके ऊपर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दूसरा फायदा इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है। तीसरा फायदा इरशाद फरमाया, अल्लाह उसके नामे अमाल में 10 नेकियों का इजाफा फरमा देता है। चौथा बेनिफिट इरशाद फरमाया, अल्लाह उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। सुभान अल्लाह। So the person who is sending salawat upon Nabi sallallahu alaihi wasallam, what a beautiful great reward by sending salawat upon Nabi sallallahu alaihi wasallam. The person who will send, Nabi alaihi salam said summary of his saying, khulasa,
that the person who will send one time salawat upon me, Allah will send 10 rahmah upon him. Subhanallah. The second benefit, Allah will ask the angels, rub out 10 of his bad deeds, his sin. Subhanallah. And the next benefit, Allah subhanahu wa ta'ala asks the right hand angel to write down 10 of good deeds in his namaya amal, in his deed sheet. Subhanallah. And the great another benefit, Allah subhanahu wa ta'ala elevate his status 10 times more high. Subhanallah. So the 10 times वो आदमी अल्लाह की रहमत के और ज्यादा करीब हो जाएगा, अल्लाह उसके 10 दर्जे बढ़ा देगा. तो जरा मोहब्बत से मिलके पढ़िए, say together with मोहब्बत, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. And whenever this ayah karima is read by any mahfil, then it becomes wajib to read at least one time. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi wa lamasi. The Mufassirin of the Quran, they say, whenever this ayah karima of the Quran has been read in any gathering, it becomes wajib at least one time. All the people there, Muslim, Mu'min, they should send salawat upon Nabi sallallahu alaihi wasallam. And further, whenever the name of Nabi sallallahu alaihi wasallam is mentioned, then they should also say at least the shortest one, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. This should be our routine. So subhanallah, as the time is very close, I would like to just come upon the topic which I have just mentioned, the ayah karima and hadith of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, as we are the ummati of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so how fortunate are we that we want as to have love of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, which is the greatest goal of every single believer. Because those people who have got the iman, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned their greatest quality in the Holy Quran, that they are the very staunch in the love of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. They want to achieve the love of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. But how can we achieve the love of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, which is the main goal of every single believer? So Allah subhanahu wa ta'ala guided us in the Holy Quran so beautifully, as Allah Almighty say, Kul in kuntum tuhibbun Allah. Oh my beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, say, in kuntum tuhibbun Allah. Oh people, if you want to have the love of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, what you have to do? Fattabi'uni, follow my footstep. You follow my sunnah. Subhanallah. When you will follow my footstep, when you will follow my sunnah and tariqah, what will happen? First, you wanted to love Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, but in other ways you couldn't achieve it. But when you will follow the beloved Habib sallallahu alaihi wasallam sunnah and tariqah, yuhibbukumullah, Allah Almighty Himself will grant you His own love. Subhanallah. पहले तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते थे, तुम किसी तरीके से अल्लाह की मोहब्बत को हासिल न कर सके, तो उस रब ने खुद अपने फजल से अपनी मुकद्दस कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में उसका तरीका इरशाद फरमा दिया. कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, लोगों अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो, तो मेरे महबूब अपनी उम्मत को फरमा दे, फत्तबिऊनी, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मेरी सुन्नत को अपना लो, युहिब्बुकुमुल्लाह, इसके सदके में अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. और सिर्फ महबूब ही नहीं बना देगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ उनकी सुन्नत पर चलने वाले को अल्लाह अगला इनाम ये देगा, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, उस महबूब नबी की इत्तिबा के सदके अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. वल्लाहु गफूरुर रहीम. चाहे तुमने कितने भी गुनाह कर लिए, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस और ना उम्मीद ना होना. अल्लाह की बारगाह में सबसे वही ज्यादा मकबूल इंसान है, गुनाह और गलती होने के बावजूद अपनी गुनाह और गलती का वो रियलाइजेशन करता है, एहसास करता है, और फिर अपने रब की बारगाह में फिर अपना सर आके झुकाकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता है. अल्लाह उस बंदे से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देता है, उसके दिल से निकली हुई सच्ची तौबा को भी कबूल फरमा लेता है. तो इसलिए फरमाया वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह तो बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है. सो योर लॉर्ड ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वेरी मर्सीफुल एंड फॉरगिविंग, मोस्ट forgiving. So it doesn't matter how much sin and mistakes you have made in your life.
Don't be disappointed, as Almighty Allah subhanahu wa ta'ala say, La taqnatu min rahmatillah. Never be disappointed by the mercy and rahmat of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Because to become disappointed from the mercy of Almighty Allah, oh, Allah is not going to forgive me, this is haram to say. It is forbidden by the law of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. So this why always keep strong hope. Subhanallah, because as it has been said in the deen of Islam, al-imanu bain al-khawfi wal-rija. If you want to have the safety of your iman, so on one hand you should have the fear of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, and on the other hand you keep hope in the mercy of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Your iman will remain safe inshallah. सुबहानल्लाह, ईमान की सलामती चाहने वालों, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, लेकिन ईमान को सलामत रखने के लिए जरूरी है अल्लाह के अजाब के डर की वजह से अपने रब का दिल में खौफ भी रखो. हैव द फियर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑन वन हैंड, और दूसरी तरफ अल्लाह की रहमत और बख्शिश और मगफिरत की उम्मीद भी रखो कि उसके अलावा कोई और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला नहीं है. सुबहानल्लाह. और फिर आगे फरमा दे, कुल अतीउल्लाह व रसूल. O my beloved Habib sallallahu alaihi wasallam, say to people, make itaat, be obedient to Allah, or be obedient to his beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. فَإِن تَوَلَّوْا, subhanallah, if anybody will turn away, nauzubillah, and he will turn his back toward the guidance of Almighty Allah, itaat of Allah and itaat of Rasul sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala doesn't like at all those who are ungrateful to him, those who are non-believer. Allah doesn't like them, subhanallah. But he is so kind, even जो नहीं मानते अल्लाह उनको भी अपना रिज़्क़ अता फरमा रहा है. कितना करीम और रहीम रब है तुम्हारा, सुभानअल्लाह. वो हिसाब तो आखिर में लेगा, यौम हिसाब, on the day of judgment. Accountability is on that day, but always be hopeful for the mercy and forgiveness of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. And me and you, we don't know when the time is going to end. So when our time will come to go back to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, so always every single day make tawbah and istighfar, as my and your beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. This is the great rule of Islam and our great belief that all the Anbiya Rasul, all the Prophet and Messenger of Allah, they are free from all kind of mistake and sins. Allah subhanahu wa ta'ala made them masoom anil khata, subhanallah. But even though my and your beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam also saying that he also makes every single day either 70 or 100 times istighfar in a single day. Allahu Akbar. So how many times more we need? We are sinful people. We make the mistake on every single step, every single day, or we don't know. If you are accountable every single night before sleeping, just think about your day, what I have done right and what I have done wrong. Then you will know. And before sleep, make tawbah. We don't know. There is सोने वाले रब को सजदा करके सो, फिर क्या खबर तेरी सुबह हो या न हो. We heard so many stories. So and so was sleeping and then he died, he passed away. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So may Allah subhanahu wa ta'ala keep us alive with the safety of health and iman, but every single day make tawbah with the muhabbat of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Follow the command of Allah and follow the command of beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. Finally, I would like to just give the translation of the beautiful hadith I have read in the beginning in the topic. My and your beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam is needed to be followed, but he should be followed with the true love of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because without his true love, it is difficult to follow him, and without his true love, it is very difficult to have the iman. Subhanallah, as my and your beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam demanded how much love we need to do to have for our Rasul sallallahu alaihi wasallam. My and your beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam say, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. O people, no one among you can become a true believer until he loved me Muhammad more than himself,
more than his children, more than his parent, more than anybody else in the world. Subhanallah. तो मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है और गर हो इसी में कामी तो ईमान नामुकम्मल है। और मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की और खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। Subhanallah. When you will have the true love of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, be faithful and loyal to your beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. What great reward Allah will grant you in this world and in the hereafter. Dr. Iqbal rahmatullahi ta'ala alayhi so beautifully mentioned in 2 lines कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। Subhanallah. If you will be loyal and faithful to your beloved Rasul Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Subhanallah, Allah will love you, Allah will grant you His mercy and forgiveness, and Allah will make it easy to follow on the sunnah of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you, bless your families. May Allah bless the entire Muslim ummah, all those who are not feeling well. Ameen. May Allah grant them health and shifa, either they are at home or in the hospitals. May Allah subhanahu wa ta'ala grant all of them speedy recovery, inshallah. I am your guest here for one day. I am thankful to Hazrat Qibla Mufti Umar Khattab Sahab and your management committee who have invited me. May Allah bless all of you, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the true love of His beloved Habib sallallahu alaihi wasallam and make it easy for us to follow His sunnah and tariqah, inshallah. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alameen. Shukran jazakumullah for listening these few humble words. If I have made any mistake, it is from me. May I ask, may Allah forgive me and forgive you all. And whatever I said righteously, this is the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. I beg to my Lord Almighty Allah, may Allah accept it, inshallah. Shukran jazakumullah. Those brothers who haven't done their sunnah, please do the sunnah of Jummah, inshallah. Jazakumullah.